आज का वीडियो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक के ऊपर है, जो है क्या कोब प्रोडक्शन फंक्शन में आईआरएस के साथ साथ डीआरएफ रह सकता है, लाइक रह सकता है, इज इट लाइक ट्रू और फॉल्स। काफी बार एग्जामिनेशन में आया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के एग्जाम्स में आ चुका है, एंड दिस वाज आल्सो केम इन द मास्टर्स एंट्रेंसेस। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम में 2013 साल में भी आया था। सो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। तो चलिए आपको पहले कोब प्रोडक्शन फंक्शन एक दिखा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल Q इक्वल टू A इनटू, ओके, Q इक्वल टू A इनटू L टू द पावर अल्फा इनटू K टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ये जो मैंने पैटर्न लिखा है, इट्स अ परफेक्ट एसिमिलेशन। Why alpha plus 1 minus alpha gets you to this, where alpha is obviously less than 1, and this is the shear. अल्फा से क्या पता चलता है? अल्फा इज द शेयर ऑफ कैपिटल, सॉरी शेयर ऑफ लेबर, एंड 1 माइनस अल्फा विल बी शेयर ऑफ कैपिटल इनटू प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ इन दिस वे इफ वी प्रोसीड we can find the value. अब यहाँ पर मान लेते हैं जब कैलकुलेशन में हम लोग को ये IRS and DRF लेना है, so if we take a special case where this value to be 1, okay, so this A equal to 1, the efficiency factor of production is taken to be 1. तो अब इस पैटर्न में कैसे काम करेंगे, हम लोग को दिखाना है फर्स्ट होमोजेनस है या नहीं। तो क्या करना है, so Q और ये जो L और K दोनों मान लेते हैं अल्फा टाइम्स चेंज कर रहे हैं। अल्फा तो यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग ले लेते हैं लैम्डा, so लैम्डा L लैम्डा K। तो यहाँ भी लैम्डा डाल दीजिए, लैम्डा L टू द पावर अल्फा लैम्डा K टू द पावर 1 माइनस अल्फा, ये दोनों करना है। सो लैम्डा टू द पावर अल्फा L टू द पावर अल्फा लैम्डा टू द पावर 1 माइनस अल्फा K टू द पावर 1 माइनस अल्फा। तो ध्यान से देखने पर अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर 1 माइनस अल्फा, सो इट एंड्स अप विद अल्फा एंड दिस थिंग। तो ये जो रह गया, सॉरी ये जो लैम्डा रह गया, तो इससे क्या होता है, दिस इज होमोजेनस ऑफ, अब लैम्डा का वैल्यू क्या है पावर में 1, सो होमोजेनस ऑफ डिग्री 1, 2 रहता होमोजेनस ऑफ डिग्री 2, 3 रहता होमोजेनस ऑफ डिग्री 3, 4 रहता सो होमोजेनस ऑफ डिग्री 4, 5 इन दैट वे। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ IRS basic structure. So if we give sorry, this is a constant structure, so if this value keep on rising, then what happens? Okay, but अगर हम लोग DRF की तरफ जाएंगे या फिर रिटर्न्स टू अ फैक्टर RF मतलब फैक्टर क्या देता है। सो अगर टोटल कोई फैक्टर को बदल रहे कि वो टोटल के हिसाब से कहां देगा। रिमेंबर दैट इन माय लाइफ आई ऑलवेज टेकन द रिलेटिवली हार्डर रूट, इट्स माय स्टाइल। सो अगर मुझे दोस्त लोगों ने कहा है कि भाई तुम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे से बन सकता है, तुम्हारे लिए नॉर्मल है, यू कैन कन्विंस नॉर्मल डॉक्टर्स ऑन सेलिंग एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ। So one of my two of my friends, one of my elder brother at that time were doing that. Okay, friends मतलब हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे, like 5 to 7 years elder than me. तो उन लोगों ने ऐसे ही कहा था, तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान रास्ता है। थोड़ा बहुत ऐसा कोशिश नहीं किया था, ऐसा नहीं, बुक पढ़ता था, लोगों से बात करता था, हमारे बहुत सारे परिचित डॉक्टर थे, तो वहां से सोचा क्या यही है, इज इट लाइक एवरीथिंग, क्या इसके बाहर भी नहीं कुछ किया जा सकता है। एंड देन आई टुक द रोड लेस ट्रैवल्ड। ओके, सो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट व्हाई आई एम गिविंग यू दिस, व्हाई आई टोल्ड यू दिस रादर से, सो रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, सो हाउ हार्ड वर्किंग यू आर दैट गिव्स यू अ रिटर्न। सो हियर लेबर और कैपिटल में भी कोई तो हार्ड वर्किंग है, कोई थोड़ा सॉफ्ट वर्किंग है, कोई थोड़ा शॉर्टकट में ऊपर जाना चाहते हैं। सो ऐसे केसेस में आप लोग किसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आमतौर पे देखा जाता है फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम there is a tendency to invest in capital less on labor, because if it is not a completely labor intensive structure, so capital के ऊपर इन्वेस्ट करो तो आपका टेंशन कम है, हेडेक कम है, आप आसानी से काम कर सकते हो। मतलब पहले का जो एफिशिएंसी लोगों का था अब वो नहीं रहा। Okay, so how can you tell this efficiency level? Let me give you a very example that how people are losing efficiency level. I have heard from my grandfather that when Bare Ghulam Ali or those legendary singers used to perform at some of the jalsas where there was no mic, and yet their voice was too loud that they
perform like hours after hours after hours, like 2 or 3 hours or 4 hours of shows without even a mic. So is it possible today? Answer is no. And let me give you another example. Second example, the family of Rabindranath Tagore or any kind of legendary people you take, at that time used to have like 12 brothers, 14 brothers, 7 sisters, 8 brothers. So like a woman is getting pregnant 10, 15, 14, 20 times. Some of them more than that, some of them almost like 8 to 7 is a normal average. So now at the present time, it is not only that we know that our population is growing, so we are trying to control it, but are the women really capable of conceiving 12, 14, 16 times our body like that? If we take another example from men's side, that previously a man used to eat like a lot, 5 kg or 4 kg of chicken ek saath. They used to work like जब हम लोग 12, 14, 15, 20, 25 किलोमीटर चल के जाते थे. It's impossible now. So we are not just doing almost. Yes, I have intentionally used the word impossible. So ये जो return to a factor है. So now machine only have improved in the past 40, 30 years. सिर्फ machine ने ही improve किया है. हम लोगों का जो total चीज है वो नीचे गया है. The dependency on capitalism has been really a disastrous thing. Okay, तो मैं क्या कर रहा हूँ? I am just giving you labor. Okay, it's a human labor I am doing. So this is still acceptable from my angle of vision, but I don't know. Maybe after 5 or 10 years or 15 years down the line, so there is a robot coming and teaching. So which is related, and maybe then it becomes relatively differently interesting. I don't know about that part. So if we just talk about in this case, returns to a factor plays this crucial role, and under the present regime, people are trusting on machines 10 times more than normal human beings. They are there to just switch it on. It happens in mostly, if you can say, car assembly lining and other parallel sectors. So ऐसे बहुत सारे सेक्टर है. अब समझ में वापस आएंगे. So इसके लिए आपको निकालना है डेरिवेटिव. So del Q del L. So del Q del L करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे. del Q del L क्या देगा आपको? L के हिसाब से करेंगे. So alpha L to the power alpha minus 1 into K to the power 1 minus alpha. Okay, ये देगा आपको. ये कहते हैं marginal product of labor. MPL, marginal product with respect to labor. तो चलिए इसको लिखते हैं. So L और K तो भाई दोनों पॉजिटिव है. अल्फा आपका क्या हो गया? अल्फा is this. 0 से बड़ा, 1 से छोटा. So this whole thing is, there is no problem inside. Okay, so this whole thing is positive. Problem कहाँ से होगा? This is marginal product between of labor and marginal product between of capital. So del Q del K से problem होगा. तो वहाँ क्या होगा? 1 minus alpha आपका आएगा and 1 minus alpha with respect to this. Remember that we are doing it from this function. इस function से आ रहे हैं. So 1 minus alpha whole to the power k into 1 minus alpha minus 1. So minus alpha L to the power alpha. ये वाला चीज आपको दे देगा नेगेटिव, क्योंकि अल्फा हो गया less than 1. अल्फा हो गया less than 1. So here this is less than 0. Okay. सेकेंड ऑर्डर भी अगर आपको चेक करना है, MPLL इसे कहेंगे सेकेंड ऑर्डर चेकिंग. सेकेंड ऑर्डर में अगर आपको चेक करना है तो ये आएगा अल्फा अल्फा माइनस 1, अल्फा अल्फा माइनस 1, L to the power अल्फा माइनस 2, K to the power 1 minus alpha, K to the power 1 minus alpha, and MPKK में आएगा, MPKK में आएगा 1 minus alpha. Okay, this is 1 minus alpha. ये पावर भी नीचे जाएगा, so minus alpha, K to the power minus alpha minus 1, L to the power alpha. यहाँ से देखिए ये 1 minus alpha है and this is minus alpha. 1 minus alpha negative, minus alpha positive, so this whole thing is greater than 0. और ये तो हमारा alpha है, alpha minus 1 है, alpha is less than 1, so alpha minus 1 less than 0, so this is negative, so this makes it this. ये हो गया आपका total structural value. So second order उसका हो गया negative, so that is maximized, and यहाँ इसका second order हो गया positive, that is minimized.
तो ये पूरे सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं, so there is a decreasing returns to a factor with respect to capital which is existing with IRS. So IRS भी है and DRF with respect to capital. ऐसे एक सेक्टर में कोब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन सेज कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, जो आपको प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ा रहा है. So that's all for this answer. This is a short answer, but yet a lot of mathematical approach. काफी लोगों का मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, so वो लोग मुझसे अलग तरीके से पूछ सकते हैं. इसको विदाउट मैथमेटिक्स से भी किया जा सकता है, but little bit boring, but उस तरीके से भी मैं ये वीडियो जरूर कर दूंगा. So if you have any more other queries and doubt, you want to make any other videos from me, so just tell me. I'm there for you.